Hey guys, what's up? It's me UB and you are seeing UBS Volatility Studies. Guys, welcome back to the next video that is part 1 of Class 9th Physics chapter 3 Gravitation. So let's begin. यहाँ मैं शुरू वहीं से करूँगा जहाँ से हमने ख़त्म किया था. So students, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था. Let me repeat it. What do you mean by the term gravitation? यहाँ मैं एक और वर्ड यूज़ करूँगा. That is, what do you mean by the term gravitation and gravity as well? Okay, let me tell you, the term gravitation is said to be the force that is acting between two bodies. On the other hand, gravity is the force that is occurring between an object and the earth's surface. तो हम gravitation और gravity से क्या समझते हैं? वो फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगता है उन्हें हम gravitation कहते हैं. पर बात करें एक ऑब्जेक्ट और अर्थ सरफेस के बीच लगने वाले फोर्स की, तो वहाँ हम उसे ग्रेविटी कहते हैं. ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट ग्रेविटेशन. तो चलिए जानते हैं कि ग्रेविटेशन एक्चुअली में है क्या. ग्रेविटेशन इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन द यूनिवर्स. दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम ग्रेविटेशन कहते हैं. तो चलिए हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक एग्जांपल देखते हैं. मान लीजिए आप एक बॉल आसमान में फेंकते हो, तो क्या होता है? क्या वो बॉल दूसरे प्लैनेट्स पे चला जाता है? जी नहीं, वो बॉल फिर से आपके पास आ जाता है, यानी अर्थ सरफेस पे. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी उस बॉल को अट्रैक्ट करती है. सो स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी किसने की थी? जी हाँ, आप सही हैं. ग्रेविटेशनल फोर्स की डिस्कवरी भी सर आइजैक न्यूटन, बोले तो न्यूटन बाबा ने की थी. स्टूडेंट्स, क्या आपको ये पता है कि एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स इज ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स? हमारा चलना, दौड़ना, उड़ना इज ऑल बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स. So students, next we are going to study universal law of gravitation. क्या है universal law of gravitation और कैसे हमें एक शानदार फॉर्मूला देता है? चलिए जानते हैं. The universal law of gravitation states that every object in the universe attracts every other object with a force which is proportional to the square of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, let me explain you with an example. Suppose two bodies A and B with masses m1 and m2 are lying at a distance r from each other. See the figure given below. Let the force of attraction between two bodies be F. तो क्या देखा हमने? दो ऑब्जेक्ट्स हैं A and B जिसका मास है m1 and m2. दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं. मान लीजिए इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F है. So, according to the universal law of gravitation, the first statement states that the force between two bodies is directly proportional to the product of their masses, जिसको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं F is proportional to m1 into m2. Let this equation as equation 1. Second statement क्या कह रहा है? The force between two bodies is inversely proportional to the square of the distance between them, जिसको हम इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं F is proportional to 1 upon r square. Let this equation as equation 2. So, by combining equation 1 and 2, we get F is proportional to m1 into m2 upon r square. Right students? तो क्या किया हमने equation 1 and equation 2 को combine किया, तो हमें मिला F is proportional to m1 into m2 upon r square. But students, हम अभी भी ये देख सकते हैं कि अभी तक हमें कोई फॉर्मूला नहीं मिला. So let's find the formula. To find the formula, here we will use constant of proportional. That is, F equals to G into m1 into m2 upon r square. So students, what is G here? G is our constant of proportional. तो हमें फॉर्मूला क्या मिला? F equals to G into m1 into m2 upon r square, where G is constant, also known as universal gravitational constant. तो चलिए जानते हैं कि gravitational constant का यूनिट क्या है. So, from universal law of gravitation we get F is equals to G into m1 into m2 upon r square. Is it clear to all? Okay, now here we get the unit for G. How? Let's see. The unit of force is Newton. The unit of distance is meter. The unit of mass is kg. So, SI unit of gravitational constant G becomes Newton meter square per kg square. That's it. It was easy, right? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. सो लिसन इट केयरफुली एंड अंडरस्टैंड इट नाइसली. लेट masses m1 and m2 of two bodies are 1 kg each and distance between them 1 meter.
Then putting m1 equals to 1 kg, m2 equals to 1 kg, r equals to 1 meter in the formula f equals to g into m1 into m2 upon r square. Then we get f equals to g और ऐसा कब होगा जब m1 equals to m2 equals to 1 kg and r equals to 1 meter होगा. इसलिए हम ये कह सकते हैं the gravitational constant g is numerically equal to the force of gravitation which exists between two bodies of unit masses kept at a unit distance from each other. The value of universal gravitational constant g has been found to be 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg square. So students, next we are going to know how gravitational force holds the solar system together. Yes students, did you know that it is the gravitational force between the sun and the other planet which keeps the other planets in uniform circular motion around the sun. जी हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही वो फोर्स है जो सन और बाकी प्लैनेट्स के बीच लगता है, जिसके कारण अर्थ और सारे प्लैनेट्स एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के साथ सन के अराउंड मूव करते हैं. बट स्टूडेंट्स, डिड यू नो हाउ इज दैट पॉसिबल? लेट अस नो. पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि सर्कुलर मोशन होता क्या है. किसी सर्कुलर पाथ का रोटेशन करना सर्कुलर मोशन कहलाता है. रोटेशन अलोंग विद द सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एज सर्कुलर मोशन. तो चलिए देखते हैं कि कैसे सन कंट्रोल करता है बाकी प्लैनेट्स को, और डायरेक्टली वी कैन से हाउ इट कंट्रोल्स द एग्जिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट. ओके, अ फोर्स कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव इन अ सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर पाथ, एंड दिस सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन which makes the each planet to move in a circular orbit. Thus we can say that the gravitational force is responsible for the existence of solar system. That's it. Is it clear to all? Okay. And students, similarly the gravitational force between the earth and the moon make the moon revolve at uniform speed around the earth. Students, see the picture given below. So students, हम ये देख सकते हैं कि कैसे मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, जिसका कारण है ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ which is also known as tidal locking. But students, हम इस पिक्चर में हाई टाइड भी देख सकते हैं, पर ये हाई टाइड है क्या? चलिए जानते हैं, पर उससे पहले हम ये जानेंगे कि टाइड्स क्या हैं और टाइड्स कॉज कैसे होते हैं. मेनली अगर टाइड्स की बात करें तो टाइड्स इन द सी फॉर्म बाय द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ वाटर लेवल इन द सी are due to the gravitational force of attraction which the moon and the sun exert on the water surface in the sea. So students, क्या आपको टाइड्स पता है? नहीं ना? आपको पता है टाइड्स क्या हैं? टाइड्स मतलब लहरें. एंड स्टूडेंट्स, ये लहरें यानी टाइड्स बनती कैसे हैं? नहीं बनती तो अच्छी हैं, लेकिन हाउ दे फॉर्म? So, the cause that form the tides is only the gravitational force of attraction which the moon and the sun exert on the water surface in the sea. The low tides form when the water level of sea falls, whereas the high tides form when the level of the sea rises. That's it. Okay guys, it's over for today. In the next video we will learn Kepler's law of planetary motion, acceleration due to gravity, free fall and so on. Till that, I have a question for you all. The question is, what do you mean by the term law in physics? For the next video of this lesson, subscribe UV Studies and press the bell icon. If you liked it, then like, share, comment and then whatever you want to do you can do man. But don't trouble your studies. Okay? Thanks for watching.